जी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 करने वाले हैं। एक मिनट, कॉन्ट्रास्ट सेटिंग चल रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन 93 पूछ रहे हैं कि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इज कॉज्ड बाय। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज कॉज्ड बाय ऑप्शन 1 gallstone, option 2 alcohol, option 3 starvation, option 4 hypercalcemia, and option 5 hypertriglyceridemia. Acute pancreatitis is caused by gallstone, alcohol, starvation, hypercalcemia, hypertriglyceridemia. And the right answer is A, B, D, and E. A, B, D, and E. That is gallstone, alcohol, hypercalcemia, and hypertriglyceridemia. But not by starvation. Question number 94 देखेंगे. Question number 94. True about hepatocellular carcinoma is. True about hepatocellular carcinoma. Option 1 associated HBV and HCV, associated with HBV and HCV. Option 2 cirrhosis predisposing factor, risk factor is cirrhosis. Option 3 fibrolamellar variety is not associated with cirrhosis, fibrolamellar not associated with cirrhosis. Option 4 low propensity of vascular invasion, very less vascular invasion. And option 5 alcoholic cirrhosis does not predispose to hepatocellular carcinoma. Alcoholic cirrhosis don't cause hepatocellular carcinoma. तो फिर से देखिए, ट्रू अबाउट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एसोसिएट HBV and HCV, risk factor is cirrhosis, fibrolamellar not associated cirrhosis, that low propensity for vascular invasion, and alcoholic cirrhosis don't cause hepatocellular carcinoma. And the right answer is A, B, and C. A, B, and C. That is hepatocellular carcinoma is associated HBV and HCV, risk factor is cirrhosis, and fibrolamellar is not associated cirrhosis. Question number 95 देखेंगे. Question number 95. Primary hyperparathyroidism is caused by. Primary hyperparathyroidism is caused by. Primary hyperparathyroidism caused by. Option 1 parathyroid hyperplasia. Parathyroid hyperplasia. Option 2 adenoma. Option 3 MEN1. Option 4 thyrotoxicosis. Option 5 chronic renal failure. Primary hyperparathyroidism is caused by parathyroid hyperplasia, adenoma, MEN1 syndrome, thyrotoxicosis, or chronic renal failure. And the right answer is A, B, and C. A, B, and C. That is parathyroid hyperplasia, adenoma, and MEN1 syndrome. Primary hyperparathyroidism is caused by parathyroid hyperplasia, adenoma, and MEN1 syndrome. Question number 96. When acute appendicitis is suspected, it can be confirmed by. तो बोल रहा है कि acute appendicitis confirmed by option 1 clinical examination, option 2 ultrasound, option 3 CT scan, option 4 blood count, या option 5 upper GI endoscopy.
अपर GI endoscopy. देखिए acute appendicitis confirmed by clinical examination, ultrasound, CT scan, blood count या upper GI endoscopy. And the right answer is A, B and C. A, B and C. Clinical examination, ultrasound and CT scan. Acute appendicitis confirmed by clinical examination, ultrasound and CT scan. Question number 97 देखेंगे. Question number 97. Hypoxemia is seen in. Hypoxemia is seen in. Hypoxemia seen in. Option 1, hypoventilation. Hypoventilation. Option 2, decreased FiO2. Decreased FiO2. Option 3, myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Option 4, pulmonary emboli. Pulmonary emboli. And option 5, pulmonary emboli. And option 5, diazepam of overdose. Overdose of diazepam. फिर से देखिए hypoxemia is seen in hyperventilation, decreased FiO2, myasthenia gravis, pulmonary emboli, and overdose of diazepam. And the right answer is all of the above. All of the above. Hyperventilation, decreased FiO2, myasthenia gravis, pulmonary emboli, and overdose of diazepam. Question number 98 देखेंगे. Question 98 पूछ रहे हैं abnormalities of bone metabolism is associated with excess of which vitamin? तो abnormal bone metabolism caused by increased vitamin dash. Increased vitamin dash. Option 1, vitamin A. Vitamin A. Option 2, thiamine. Thiamine. Option 3, vitamin B12. Vitamin B12. Option 4, vitamin D. Vitamin D. Option 5, tocopherol. Tocopherol. फिर से देखते हैं abnormal bone metabolism caused by increased which vitamin? Vitamin A, thiamine, vitamin B12, vitamin D, or tocopherol. And the right answer is vitamin A and vitamin D. Vitamin A and vitamin D. Question 99 देखेंगे. Question number 99. ठीक है. Diabetes mellitus can lead to. Diabetes mellitus leads to. Diabetes mellitus leads to. Option 1, vitreous hemorrhage. Vitreous hemorrhage. Option 2, rubeosis iridis. Rubeosis iridis. Option 3, retinal detachment. Retinal detachment. Option 4, third, fourth and sixth nerve palsy. Third, fourth and sixth nerve palsy. Option 5, hypermetropia. Hypermetropia. फिर से देखिए diabetes mellitus leads to vitreous hemorrhage, rubeosis iridis, retinal detachment, third, fourth and sixth nerve palsy, या hypermetropia. And the right answer is A, B, C and D. A, B, C and D. That is vitreous hemorrhage, rubeosis iridis, retinal detachment and third, fourth and sixth nerve palsy. Question number 100 देखेंगे. Question number 100. Ineffective endocarditis is seen. Infective endocarditis seen in. Infective endocarditis seen in. Option 1, MR. Option 1, MR. Option 2, AR. Option 2, AR. Option 3, AS. Option 3, AS. Option 4, coarctation of aorta. Option 4, coarctation of aorta. And option 5, VSD. Option 5, VSD. फिर से देखिए infective endocarditis seen in MR, AR, AS, coarctation of aorta and VSD. And the right answer is all of the above. All of the above. ठीक है ना. एक बात जान के रखिए, ASD अगर लिखा हुआ होता वो आंसर नहीं बनता.
ASD अगर लिखा हुआ था तो वो आंसर नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है ना। An above NIDDM patient presents with a fasting blood glucose of 180 mg/% and postprandial blood sugar of 260 mg/%. Management includes, तो NIDDM पेशेंट फास्टिंग ब्लड शुगर है 180, फास्टिंग ब्लड शुगर है 180, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर है 260, पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर 260। मैनेजमेंट क्या क्या करोगे? ऑप्शन 1 ग्लाइबेनक्लामाइड, ऑप्शन 2 डाइट थेरेपी प्लस एक्सरसाइज, ऑप्शन 3 डाइट थेरेपी प्लस एक्सरसाइज प्लस मेटफॉर्मिन, डाइट थेरेपी प्लस एक्सरसाइज प्लस मेटफॉर्मिन। ऑप्शन 4 इंसुलिन, ऑप्शन 5 क्लोरप्रोपामाइड, फिर से देखिए NIDDM पेशेंट fasting blood sugar is 180, postprandial blood sugar is 260. What is the management? Glibenclamide, diet therapy with exercise with metformin, insulin या chlorpropamide. And the right answer is C, diet therapy plus exercise plus insulin. Sorry, metformin. Question number 102. Question 102. Aortic dissection is associated with, option 1 systemic hypertension, option 2 coarctation of aorta, option 3 first trimester pregnancy, option 4 Takayasu arteritis, option 5 Marfan syndrome. So देखिए aortic dissection is associated with systemic hypertension, coarctation of aorta, first trimester pregnancy, Takayasu arteritis and Marfan syndrome. And the right answer is ABDE. फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट अगर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होगा, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा होगा, टाकायासु आर्टेराइटिस होगी और मार्फन सिंड्रोम होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 यूनिवर्सल फाइंडिंग इन एस्थमा इज, यूनिवर्सल फाइंडिंग इन एस्थमा, ऑप्शन 1 हाइपोक्सिया, ऑप्शन 2 हाइपरकार्बिया, ऑप्शन 3 हाइपोक्सेमिया, ऑप्शन 4 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन 5 मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर से देखिए यूनिवर्सल फाइंडिंग इन एस्थमा इज हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपोक्सेमिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड द राइट आंसर इज हाइपोक्सिया। क्वेश्चन नंबर 104 ट्रू ऑफ टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम इज, ट्रू अबाउट टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ऑप्शन 1 टेस्टिस प्रेजेंट, ऑप्शन 2 फीमेल हैबिटस, ऑप्शन 3 XY जीनोटाइप, ऑप्शन 4 सेकेंडरी एमिनोरिया, ऑप्शन 5 यूटेरस प्रेजेंट। फिर से देखिए ट्रू अबाउट टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, टेस्टिस प्रेजेंट, फीमेल हैबिटस, XY जीनोटाइप, सेकेंडरी एमिनोरिया, यूटेरस प्रेजेंट। एंड द राइट आंसर इज A, B and C, टेस्टिस प्रेजेंट, फीमेल हैबिटस एंड XY जीनोटाइप। आज के लिए इतने ही, थैंक